Yeah, hi guys, I'm Dr. Rajat, and with me I have Ruchika, and she's an IT professional. She came to me for a mercury removal. इनके दांतों में कुछ mercury की fillings थी, and she wanted to get rid of them and gone for these resins. So we just did an injection molding technique and remove these amalgam through ozone. You use the high vac suction as well as aquacare. So just wanted to ask her feedbacks, as a lot of our patients have inquired regarding the mercury removal. So just would like to know her story. Thanks. Yeah. Hi guys. So I think it is high time to educate people about mercury fillings, which doctors themselves have been advising. I mean, since long time. I remember 30 years, 40 years. When you know very well that you are, I mean, whenever you are eating food or you are drinking water or anything, and even if you are breathing it, right? You all the time, every second of your life, you are consuming mercury in some form, which is very toxic for your body. And I basically educated myself by reading few books by the survivors, of breast cancer, because my mother herself had breast cancer. So I think these small things, which brings toxicity to your body. I mean, if you remove it from your daily life, it can make a lot of change. And this procedure was completely painless for me. It didn't take much time. It took only few minutes. So I think you guys should go ahead with it. You should never keep your mercury in your mouth, at least, So this particular filling, when was this done? This was done in 2004. Okay. Long back. Yeah. So basically, I started studying about it almost 2 years back, but due to COVID, I was very scared to come out to a dentist, due to the exposure to COVID. So maybe he can give us more clue on the safety measures that doctor is taking here. Yeah. So mercury replacement के लिए सबसे पहले तो you need to have a good high vac suction, वो बहुत important है. A good cleaning unit, वो बहुत important है. और aquacare से हम लोग clean करते हैं, ozone से हम लोग जो fillings हैं वो करते हैं. और सबसे important चीज़ है कि जब हम fillings को निकालते हैं, कि rubber dam यूज़ करना बहुत important है. और एक highly अच्छा आइसोलेशन चाहिए उसको रिमूव करने के लिए. और उसके बाद आई थिंक इट टुक अस 5 to 10 minutes for this particular procedure, and now she's promised me कि ये रेगुलरली मेरे पास आएंगी फॉलोअप के लिए. अभी एक फिलिंग निकाली, 2 फिलिंग और निकालेंगे. टॉक्सिसिटी की बात करूँ तो चाहे हार्मोनल इम्बैलेंस हो, ट्रेमर्स हो, मस्कुलर डिसफंक्शन हो, मर्करी पॉइजन के बारे में तो आपको पता ही होगा, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूरोवास्कुलर इम्बैलेंस बहुत कॉमन है आजकल, और जब आप मर्करी अंदर लेते हैं अलॉय के साथ, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लामेशन होती है और डिस्कम्फर्ट तो रहता ही है. तो स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो मर्करी फिलिंग सबसे पॉपुलर है, और मैंने पहले भी अपना एक वीडियो बनाया है मर्करी को लेके. रिटेंशन वाइज देखें तो काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी होती है, बट लॉन्जिविटी की बात करें तो उसके अंडर के सरफेस पे ज़रूर इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो एक डे टू डे प्रैक्टिस में अगर आप फॉलोअप करेंगे और रूटीन चेकअप कराएंगे तो अच्छा रहेगा. जैसे इन्होंने रिप्लेस कराया है, और काफ़ी अच्छी टेक्निक्स है जिससे हम, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग से हमने इनका फिलिंग किया है, तो इनका जो और स्टैम्प टेक्निक से हमने जो मॉर्फोलॉजी थी दांत की, वो उसी कॉन्टोर में बना दिए. तो आई थिंक कोई किसी तरह डिस्कम्फर्ट तो नहीं लग रहा है. सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू एजुकेट. आई एम सो थैंकफुल फॉर shooting this video and taking her feedback and consent. This is the medium where we educate the patients, and if you have any query regarding mercury toxicity and poisoning and other side effects, how it is done, we'll be happy to answer all your queries. Thanks a lot.